All right, so let's start. So the one thing that I want to talk about today is the facts that you need to remember, because you see, according to your syllabus, for O levels at least, your exams, obviously the MCQ exam, it's going to be based on two main things. There's the assessment objective 1, which is about knowledge with understanding. It simply means you need to remember some facts, some laws, definitions, concepts, different theories. You need to know about, you need to have some vocabulary, some terminology, some things that are conventional to the way those words are used. So for example, symbols, different quantities, those kind of things. You need to know about certain instruments, where we use them, why we use them, why is this a good approach for that. Although that is not dealt with in very high detail in O levels or IGCSE. It's more detailed in IGCSE compared to O levels, but still in both cases, it's pretty rudimentary. Similarly, you need to know about some application of these scientific processes in the society, what are their economic, environmental implications and all that. So that is your assessment objective 1. That usually amounts to, if I'm not wrong, 30 to 40% of the whole paper. So that is what they're going to do. How does the question ask you about it? They usually describe it. They just state a fact and they're like, okay, which one of these is true? Or they describe a certain process and they're like, ab inse bataye kaun sa acha hai? Or they can give you some steps, some outlines, like 4 steps, and you have to arrange them in particular order. Acha, ye wala hoga aur ye nahi hoga. That is what assessment objective 1 is about. The rest of your paper, mainly it's going to be assessment objective 2, which is they give you information and you have to use that information. And how you use that information to solve these problems, that is what the second thing is. So this is like the question where they ask you to locate something like A, B, C, D, where is the RF value of this particular thing? Where is it on the chromatogram? Or they can ask you to select a certain thing from different options that you have. Or information आपको जो जैसे isotopes में वो different information pieces दे देता है और आपसे कहता है इनमें से select करें. That is assessment objective 2. Similarly, they might ask you to make some predictions or hypothesis, although वो questions अब इतना नहीं आते, पहले बहुत आते थे. Then some patterns that you might want to see. So for example, वो आपको cobalt के बारे में questions पूछ लेगा और आपने cobalt का नहीं पढ़ा हुआ डिटेल में, but आपने copper का तो पढ़ा हुआ है. तो copper and cobalt might be similar in certain way. Similarly, वो आपको किसी ऐसे substance के बारे में पूछ लेगा, जैसे there was this question on blue diamonds. Blue diamonds conduct electricity. अब ये वो question है जो आपने कभी देखा नहीं, जिनको हम out of syllabus या out of the box type questions बोलते हैं. ये आपका assessment objective 2 होता है, and this is going to make around 60 or 60 to 70% of the syllabus of your exam. So these are the two main kind of questions that you'll get. So today I want to focus on AO1, which is an assessment objective 1, which is knowledge with understanding. What facts you need to know, what definitions, what concepts, what theories, what instruments, apparatus, what vocabulary, what terminologies, what conventions, what quantities you need to know about, what technological applications you need to know about, what are the social, economic, environmental implications जिनका आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में वो O levels या IGCSE दोनों में पूछ लेगा. We still don't have any people in IGCSE, but I will still refer to the syllabus in case there is something related to that. All right. The weightage, obviously, you know, it's going to be just one paper this year, and you need to be aware of a few key ideas. किसी भी question में ना ये ideas बार-बार वो check करते हैं. पहला idea ये है कि resources are finite. तो जितने भी environmental issues आते हैं, recycling के, renewable energy के, conservation के, वो सारे के सारे उसके ऊपर base करते हैं. The idea is that the resources are finite. The second idea when it comes to chemistry is the environmental and the economic concentration of something. जैसे raw material क्या है, energy cost क्या है. We talk about it in the terms of something is easier than the other. So we say that potassium is easier to ionize compared to calcium. तो वो easier का मतलब यहाँ पे ये है कि energy उसमें कम लगती है. Because economic consideration hai. Why do we use catalyst? Why are reversible reactions? Why in those it's important to push the equilibrium to the right side so that more product is concerned. Yes, Mohammed, blue diamonds do conduct electricity because they have free electrons. Then the environmental health and safety issues, जैसे chemicals के बारे में, जैसे
इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको हैजर्ड्स क्या हैं, वी नो दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज टॉक्सिक, तो वो टॉक्सिसिटी उसकी पता होना चाहिए आपको कि इट्स पॉइजनस. दैट्स जस्ट वन एग्जांपल. एसिड्स के बारे में कि व्हाट इज द बेस्ट piece of equipment you must have when you're dealing with acids. Obviously that's a glove or some safety glasses or safety goggles. Then why are chemicals important in the industry and in everyday life? तो यहाँ पे आ जाता है रोल नेफ्था का. तो ये कुछ की आइडियाज हैं जिनके ऊपर वो बात करेगा. And obviously there are sections in the syllabus, so I'm going to go syllabus wise. If you want, you can open the syllabus on the side and refer to it as we go along. So the first section in the syllabus of O levels is experimental chemistry. अब एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में वो सबसे पहले आपको नाम पता होनी चाहिए. तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड इज द यूनिट, स्टॉप वॉच इज द इंस्ट्रूमेंट. अब ये यूज कहाँ पे होगा? wherever you want to measure rate of reaction, it's going to be very important there. So there may be questions in which you have a stopwatch and it might not be relevant to that, and they may ask you कि अच्छा यहाँ पे कौन से इक्विपमेंट चाहिए. तो रेट कैलकुलेट करने के लिए टाइम चाहिए, अदरवाइज हमें टाइम की जरूरत नहीं होती. टेम्परेचर मेजर करने के लिए यू यूज डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन इज आल्सो इन यूनिट, बट उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता. एंड टेम्परेचर में यू नीड अ थर्मोमीटर. And what kind of thermometer? I know many students study physics. It's not relevant to us. हमें बस एक specific temperature measure करने के लिए एक thermometer चाहिए. और temperature की consideration, how does it relate to other chapters? Is that first of all, if something melts at high boiling point, or sorry, if something melts at a high temperature, then you need to somehow lower the energy cost of that thing. तो उसके लिए हम catalyst use करते हैं. उसके लिए हम impurities use करते हैं. So one important example of that is aluminium oxide, which has a high melting point, so we add cryolite to that ताकि उसकी melting point कम हो जाए and the energy cost come down. Similarly, temperature की consideration is related to kinetic particle theory, जहाँ पर बात ये होती है कि ज़्यादा kinetic energy होगी तो particles will collide more, so that relates to rate of reaction as well. Similarly, temperature is related to exo and endothermic. Obviously, that chapter is based on temperature. So वहाँ पर बात आ जाती है कि the higher the temperature, the lower the yield of an exothermic process. Why? Because the equilibrium is going to shift towards the endothermic side. So that is also an LCP, Le Cheltier principle, जिसके बारे में temperature दे रहा है. Similarly, temperature की relation एक और है कि आपको कुछ temperatures याद होने चाहिए. जैसे आपको पता होना चाहिए कि 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक रिएक्शन के लिए यूज होता है. Does anybody recall what that reaction was? जहाँ में 300 डिग्री सेल्सियस हम करते हैं. Similarly, there's another figure, 450 degrees Celsius. वो कहाँ पे use होती है? Yeah, Haber process. Very good. So in Haber process, you need to have 450 degrees Celsius. अब obviously, that's not confirmed कि 450 के अलावा reaction होगा नहीं. ऐसा होता है. But the equilibrium is, we compromise it. The yield is compromised because the reaction is exothermic. So we push it backwards. ताकि we push the equilibrium a little backwards, but we keep a high rate of reaction, and 450 is usually the sweet spot that we consider. Similarly, 300 degrees Celsius is considered when you're trying to make alcohol using acid catalyst. अब वो कौन सा acid है? Phosphoric catalyst होता है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है याद करने. So these are some points in the whole syllabus where temperature is important. Similarly, the idea of mass. मैस की डेफिनेशन नहीं पूछेगा वो आपसे, वॉल्यूम की डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल एपरेटस मैस को या वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज होता है और उसमें यूनिट्स क्या हैं. सो वॉल्यूम में यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, एंड टू कन्वर्ट इट टू डीएम क्यूब यू नीड टू डिवाइड बाय 1000. Similarly, to convert a dm cube to centimeter cube, the conversion rate is 1000. So you multiply dm cube by 1000 to get the cm cube, and moles question में ये इसके ऊपर important आता है. अच्छा, MCQs में what they do is that instead of giving you the final answer, sometimes they give you a fraction or half of an answer, half cooked answer. तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए that how can you write an expression. मसलन वो आपसे कहे कि 200 centimeter cube है, एक gas है, how many moles is that? Obviously, what do we usually do? We convert that to dm cube, then we divide it by 24, right? That's what we do. So your examiner might give you an option where you just have to write 200 divided by 24,000. So that's an option you can still consider, because that is related to the value that you might have written. तो जरूरी नहीं है कि you plug in all of those in a calculator and then figure it out. You can just write your answer कि अच्छा 24 cm cube को मैं कैसे convert करूँगा या करूँगी, and then 200 cm cube को, and then you can simply take that value and match it to the one that you have. You don't have to get to the final answer every single time you have some numbers in there.
Some instruments that you need to know where they're used. So burette का कहाँ use होता है? Burette is used in titration. Burette is used when you are trying to measure liquid volume to a very high accuracy or precision. Another point जहाँ पे वो आपको actually गलत use करता है burette का, वो ये when they are collecting gases. अब gas collect करने के लिए inverted burette बना दो, ठीक है? If you want, I can draw it for you. So if you have an inverted burette tank and there is an inverted burette here, burette has a tap at the top, so there is a tap, and they can be like, okay, there is a delivery tube coming in, and that delivery tube is giving some bubbles in there, so that's those bubbles can be collected, or ये burette है हमारे पास. It is not a very smart way of collecting gas because ये tap खोली और वो चले जाएंगे. Similarly, why do you even need it? A burette, a much better thing would be a measuring cylinder. An inverted measuring cylinder would be a really good option for this. Or if you just want to collect it to test, then you can simply have a glass that is not even graduated. So graduated का मतलब होता है ये lines जो लगी होती है ना किसी भी ट्यूब के ऊपर, किसी भी बीकर के ऊपर, ये जो lines है ये graduated होती हैं. So where do you need it? Sometimes in the diagrams they might give you. So for example, वो आपको दो beakers दे देता है, एक इस तरह का और एक इस तरह का. अब इन दोनों में से कौन सा किस काम के लिए बेहतर है वो इस तरह से आपको पता चलेगा that this one is useful for measurement and this one is useful for just collection. So that's important. If you have diagrams in which they have given you these experimental apparatus and all that, you just need to know that measurement के लिए you need graduated, you need these lines, but for collection you don't need these lines. Sure, having these lines helps, you can measure it, but अगर measure करना ही नहीं है, collect करना है, तो obviously we don't need these lines. Umar, this is not one specific chapter. Right now we are experimental chemistry. We are going to go through the whole syllabus, hopefully. अगर आज पूरा नहीं होगा तो कल हम बाकी बातें भी discuss कर लेंगे. So measuring cylinder, कहाँ पे use करते हैं उसको? When we are collecting gases, when we are collecting liquids, both of them. But gases को collect करते हुए हम measuring cylinder को किस तरह से use करते हैं? Upward delivery, downward delivery. उन दोनों में measuring cylinder use होता है. इस तरह से कि आपके पास measuring cylinder है, अगर मैं इस तरह से करूँगा तो ये downward delivery है, और अगर मैं इसको inverted रखूंगा तो ये upward delivery है. अब upward delivery और downward delivery के ऊपर question ये आता है कि आपकी whatever gas you want to collect, it should have MR which is greater than 32, and here the MR should be less than 28. तो ये एक ज़हन में रखिएगा that if your MR is less than 28, then upward delivery is a good option. If your MR is greater than 32, downward delivery is a good option. Sure, we can always consider कि अगर MR greater than 28 है तब भी this is a good option. It is practically, for example, कल हम बात कर रहे थे that there is a gas methylamine. Methylamine बहुत useful से एक process है जिससे वो बनती है. So methylamine has an MR of 31 point something. Alright. So इसको collect करने के लिए हमें बड़े आराम से हम downward delivery use कर सकते हैं. And we actually do that. But in O levels और IGCSE we assume कि 28 to 32 वाली gases जो हैं जिनका MR ये है उनको हम collection over water वाले process से collect करते हैं. So collection over water, that's a good option for that. Now, what gas can you not collect it? Except for soluble gases. So for soluble gases, you cannot. ठीक है? It's very important कि soluble gases के लिए आप ये नहीं करते. तो उनको हम कैसे collect करते हैं? We pass them through a drying agent. So drying agent कौन से हैं आपके syllabus में? The one drying agent that you need to know about is concentrated H2SO4. That is the only one you need to memorize. Sure, there are others. There's silica gel, जो बहुत सारे student पढ़ते हैं. There are carbonates that you can pass it through. But हमें ज़रूरत नहीं है किसी को याद करने की. This is the only one that you need to remember. That concentrated, it has to be concentrated. Dilute होगा तो काम नहीं करेगा. So concentrated sulfuric acid is one drying agent that you need to have, need to know of. So collection of gases में हमारे पास क्या consideration हो गई? Number one, we need to know what the MR is, and number two, we need to know if it's soluble or not. So gases that are soluble in water. So for example, acidic gases, they will be soluble in water. Neutral gases don't necessarily. So nitrogen को आप collection of water से कर सकते हैं. Sure, थोड़ा बहुत उसमें water vapor आएगा, but you can just throw it out. But carbon monoxide, water is a very good option for that because water में dissolve नहीं होगी और उसकी MR is equal to 28. So वो बहुत अच्छी option है इस काम के लिए. नाइट्रोजन को हम नहीं करते, नाइट्रोजन के बारे में क्वेश्चन भी नहीं पूछता है.
Similarly, carbon dioxide, it has a higher MR and it's soluble in water. You know, it makes carbonic acid. So that is why we don't need it. Calcium oxide is a drying agent. It can be used as a drying agent, but again, we don't need to remember that. It is considered H2SO4. That's the only one that you need to memorize. Umar, as I told you, the topic right now is experimental chemistry, but we'll keep on changing the topic as we continue. All right. Another experiment that you need to know कि rate of reaction कैसे measure करते हैं. This is another experimental technique जिसका setup करना आपको आना चाहिए. दो setups हैं जो आपको आने चाहिए. एक है कि वो आपसे कह देता है कि collect करने इस गैस को बताएं. तो बड़ा आसान है. You figure out कि गैस का MR कितना है और ये soluble है कि नहीं है और आप बता दो. Downward delivery, upward delivery, collection over water. दूसरा setup है rate of reaction का. तो rate of reaction का जब भी आपने setup करना है तो you need to remember कि rate of reaction depends on two things. There is the output and there is the time. So time के लिए तो obviously you need stopwatch. There is no other option for this. Stopwatch is the answer. Stop clock वगैरह अब नहीं आते. अब पुराने ज़माने में होते थे. So stopwatch is the only instrument that you need for time. Output कौन सा हो सकता है? उसकी base पे check किया जाएगा what instrument is useful. So you have to look at the reaction that you have. So if the reaction is producing a gas, then you can collect the gas volume. और उसके लिए आपको ब्यूरेट हो सकता है. That's a bad choice, but still चल तो जाएगा. Measuring cylinder, inverted measuring cylinder is a good one, and you can relate it to this whole collection of gas. You can also use gas syringe for it. So remember, gas volume अगर होती है तो एक gas syringe होती है जिसके ऊपर ऐसे graduated lines होती हैं. अगर कोई gas syringe हो जिसपे ये lines नहीं है तो उसका हमें कोई फायदा नहीं है. लेकिन इस केस में एक चीज ध्यान में रखनी है, beaker must be sealed, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रहा है, बीकर अगर सील नहीं होगा तो आपकी गैस जो है वो यहाँ से escape कर जाएगी. So the beaker must be sealed. If you don't want to do that, if you don't want to collect it like that, then another option, if the gas is still coming out, so if gas is still there, then you measure the change in mass. So this triangle simply means change. Okay, so change in mass कैसे measure करोगे? This way you have to make sure that the beaker is open. ये चीज बड़ी जरूरी है कि जब आप गैस कलेक्ट कर रहे हो, the beaker should be closed, but when the beaker is open, then you are like अच्छा अब हम गैस का mass change करेंगे. तो यहाँ पे आपको balance चाहिए. You need to be able to measure the balance that you have so that you can measure the change in mass. So that's the change in mass. यहाँ पर change in volume है, यहाँ पे change in mass है. That is the other way of measuring rate of reaction. अच्छा, अगर आपका कोई रिएक्शन ऐसा है जो कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है, so temperature is the factor that will be changing. So change in temperature, तो उसके लिए obviously आपको थर्मोमीटर चाहिए. तो आपको make sure करना है कि आपका थर्मोमीटर ही यूज हो और कहां पर बल्ब ऑफ थर्मोमीटर होगा, इट शुड बी इमर्स्ड इन द सॉल्यूशन. अब दो चीजें हो सकती हैं. एक ये कि आप चेक करना चाह रहे हो कि कोई चीज बॉयल हो रही है कि नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली इन दैट केस यू नीड द थर्मोमीटर टू बी वेयर द वेपर इज. और एक आप चेक करना चाह रहे हो कि लिक्विड का टेम्परेचर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ. सो इन दैट केस योर थर्मोमीटर, द बल्ब शुड बी इमर्स्ड इन द लिक्विड. बट बहुत कम क्वेश्चन आता है ये, लेकिन ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जो बल्ब है ऑफ द थर्मोमीटर शुड नॉट बी टचिंग द ग्लास. Because it must be a little hovering in the top. Liquid जहाँ पे भी है उस liquid में होना चाहिए उसको उसका bulb जो है. और उसकी वजह सिंपल सी है, you need to measure the temperature of the bulb, not of the glassware that you have. So temperature में आपको thermometer की requirement होगी. So ये कुछ factors हैं जिनको rate of reaction से हम relate कर सकते हैं. Change in mass, change in volume, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन पीएच के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, लेकिन ओ लेवल्स में इतना उसके ऊपर डिटेल नहीं होती, तो इसलिए वी डोंट हैव टू कंसीडर दैट. ऑब्वियसली एनी फैक्टर दैट, एनी क्वांटिटी दैट इज चेंजिंग यू कैन मेजर इट. तो कई दफा वो आपको चेंज इन पीएच अगर दे देता है, तो चेंज इन पीएच में आपको पता होना चाहिए कि पीएच कैसे चेक करते हैं, बिकॉज द रिएक्शन आर यूजुअली वेरी फास्ट, तो वो ओ लेवल्स में उसके ऊपर क्वेश्चन कम ही आता है. रेट ऑफ रिएक्शन में एक चीज और आती है जो कि होती है कि व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग अ प्रेसिपिटेट. ये तो वो थे ना जहाँ पे गैस बन रही है तो ये दोनों मेथड हो गए, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये मेथड हो गए. व्हाट अबाउट व्हेन यू आर गेटिंग अ प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग? सो व्हेन अ प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, सो वहां पर आपने क्या देखना है, ना आपका मैस चेंज हो रहा है, ना आपका कोई भी क्या कहते हैं टेम्परेचर हो सकता है चेंज हो सकता है ना चेंज हो, वी डोंट नो, वो यूजुअली एग्जाम में उतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं देता है. तो हाउ डू यू नो कि प्रेसिपिटेट चेंज करने के लिए कौन सा मेथड यूजफुल है? टर्न्स आउट वो आपको इसमें क्वेश्चन फ्लिप करके देगा. वो आपसे ये नहीं कहेगा कि अच्छा बताएं प्रेसिपिटेट बन रहा है तो विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस. वो आपसे कहेगा कि कौन सी ऑप्शन वैलिड नहीं है, वो आपसे ये पूछेगा. और उसको चेक करने का क्या तरीका है कि जब प्रेसिपिटेट बन रहा है तो द सॉल्यूशन इज ऑब्वियसली गोइंग टू टर्न क्लाउडी, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई सॉलिड बन जाएगा जो आपको
ऑब्वियसली पूरा सोल्यूशन में वो सॉलिड नजर आना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए द बेस्ट ऑप्शन इज टू मे बी यू हैव दिस थिंग, या बीकर जिसमें वो प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया। सो देयर इज अ रेड प्रेसिपिटेट फॉर एग्जांपल, सो ये रेड प्रेसिपिटेट उसमें बनना शुरू हो गया और अब आपको ये बीकर नजर नहीं आ रहा। तो क्या नजर नहीं आ रहा? यूजुअली व्हाट वी डू इज कि उसके नीचे एक पेपर रखते हैं, उस पेपर पे क्रॉस मार्क रख लेते हैं और ऊपर से उसको देख लेते हैं। तो अगर हमें वो क्रॉस मार्क नजर आना बंद हो जाए, सो इसका मतलब है कि प्रेसिपिटेट बन रहा था और रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है, या रिएक्शन हो रहा है और हमें ये नजर आना बंद हो गया। द मोमेंट वी नो दैट हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया। सो दिस अ वेरी रेयर क्वेश्चन जो कभी कभार अगर कभी आए भी तो, इफ यू आर रियली रियली अनलकी, वैसे अनलकी होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है यहाँ पे, मतलब बहुत कम चांस है कि इसके क्वेश्चन आए, बट स्टिल दैट इज समथिंग यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है, अगर गैस नहीं आ रही है, अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, तो प्रेसिपिटेट को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में? यूजुअली वी पुट अ मार्क, दैट वुड बी अ क्रॉस मार्क, दैट वुड बी समथिंग दैट इज बिहाइंड द बीकर और व्हाटएवर थिंग रिएक्शंस हैपनिंग है, तो वहां पे हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज आपने जिम्मे रखनी है कि जब भी चीजों को मिक्स करते हैं उसके लिए कोनिकल फ्लास्क यूज करते हैं। सो कोनिकल फ्लास्क इज यूजफुल इफ यू आर ट्राइंग टू मिक्स टू लिक्विड। सो अगर आपको रिएक्टेंट दे देता है ऐसे कि दो एक्वस सॉल्यूशन है, एसिड बेस रिएक्शंस हैं, या आपके पास सॉलिड है और दूसरी चीज को दूसरा एसिड है, सो मेटल एडेड टू एन एसिड, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन वेयर यू आर ट्राइंग टू मिक्स थिंग्स टुगेदर, कोनिकल फ्लास्क इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। बट अगर आपने किसी चीज को हीट करना है तो बॉइलिंग फ्लास्क इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। सो उनका फर्क क्या है कि कोनिकल फ्लास्क हैज दिस कोन टाइप शेप, ठीक है, पार्डन माय अमेजिंग ड्राइंग स्किल्स, उनको थोड़ा सा आप माफी दे दीजिएगा मुझे। ऑलराइट, दिस इज योर बॉइलिंग फ्लास्क एंड दिस इज योर कोनिकल फ्लास्क। दिस इज गुड फॉर मिक्सिंग, दिस इज गुड फॉर, एज द नेम सजेस्ट, बॉइलिंग, ठीक है। तो आपने देखना है कि कहां पर आपकी एप्लीकेशन क्या है। अगर रिएक्शन ऐसा है जहां पे हीट हो रहा है तो वहां पे मिक्सिंग वाला इतना यूजफुल शायद ना हो, बॉइलिंग वाला यूजफुल होगा। तो यू कैन पिक दैट ऑप्शन कि अच्छा डायग्राम में अगर बॉइलिंग फ्लास्क है और वो हीट कर रहा है उसको, तो दैट शुड बी अ गुड ऑप्शन। ओके, सो यू हैव टू कंसिडर दैट अगर कभी भी आपके पास रिएक्शन होता है। ओके, सो यू हैव टू कंसिडर कि ये अब जब टेस्टिंग कर रहे हो आप, तो तब आपको टेस्ट ट्यूब इज फाइन। सो टेस्ट ट्यूब पे कोई ग्रेजुएशन नहीं होती, टेस्ट ट्यूब में सिर्फ कलर चेक करते हो। तो जितने भी आपके पास आयंस के टेस्ट होते हैं सारे, वो टेस्ट ट्यूब में हम उनको चेक कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑप्शन जहां पर हमें एक पेपर चाहिए, जहां पे हमें एक ड्रॉपर के साथ एक पेपर चाहिए, तो वहां पर वो आपसे आरएफ वैल्यू के बारे में पूछ सकते हैं। तो आरएफ क्या, दो बातें आपको पता चाहिए। वो डेफिनेशन नहीं पूछेगा आरएफ वैल्यू की, लेकिन आपको उसका फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर वो आपसे कह देता है कि ग्राफ है जहां पर दिस वाज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर सॉल्वेंट फ्रंट और ये डॉट्स हैं, तो वो आपसे कहता है जी बताएं इनमें से किसका आरएफ वैल्यू इज क्लोज टू 1 और क्लोज टू 0.9। तो उसका मतलब क्या होता है? 0.9 का मतलब ये होता है कि इट इज जस्ट मल्टीप्लाइड विद 100, व्हाटएवर डेसिमल पॉइंट दे गिव यू, मल्टीप्लाइड विद 100। सो इन 90% ऑफ द डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का 90% ट्रैवल कर लिया उसने, तो वो कौन सा है? वो ये है, लेट्स सपोज ए बी सी और कोई यहाँ पे डी है। तो 90% जिसने ट्रैवल किया वो ए है, तो दैट इज द वन। अगर वो आपसे कहते हैं कौन सा है जिसका 0.1 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करें, 10% बन जाता है, सो दैट इज गोइंग टू बी सी, राइट। वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद डी। सो डी के साथ मसला ये है कि डी इज गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड इन दिस सॉल्वेंट, तो डी तो वहां से गायब हो जाएगा। सिमिलरली अनदर प्रिकॉशन दैट यू मस्ट टेक, सो प्रिकॉशंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर आप कोई टॉक्सिक चीज के साथ काम करें, यू नीड टू हैव ग्लव्स। अगर कोई आरएफ वैल्यू जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करनी, तो दिस बेसलाइन दैट यू हैव, तो बेसलाइन शुड बी अबव द सॉल्वेंट लेवल। पानी होना जरूरी नहीं है, बट सॉल्वेंट लेवल से ऊपर उसको होना चाहिए बेसलाइन को। सिमिलरली ये आपका सॉल्वेंट फ्रंट होता है, सॉल्वेंट फ्रंट जो है वो पेपर इतना होना चाहिए कि सॉल्वेंट फ्रंट से आगे पेपर, ये जो पेपर का इतना सा पोर्शन है ना जो सॉल्वेंट फ्रंट से ऊपर है, ये होना चाहिए। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जी सॉल्वेंट फ्रंट was at the top of the paper, so that means you need to change the paper, you need to do another experiment of the force. This is not a paper, we are just going through the syllabus and trying to figure out what things we need to remember for different questions, or what kind of questions we can get on different chapters. Alright, so solvent front होना जरूरी है कि उसके आगे थोड़ा सा डिस्टेंस हो। अगर नहीं है तो इसका मतलब है आपको पेपर चेंज करना पड़ेगा, रिएक्शन दोबारा करना पड़ेगा। सो दीज आर सम थिंग्स दैट क्रोमेटोग्राफी में वो आपसे पूछता है। अच्छा, फिर आ जाती है बात कि आपके पास जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं, फिजिकल सेपरेशन टेक्निक्स, जिनको हम प्योरिफिकेशन टेक्निक्स भी बोलते हैं। सो फिजिकल सेपरेशन में हमारे पास कौन से मेथड्स आ जाते हैं?
सो वहां पर आपने देखना है कि इट ऑल हैज टू डू विद सॉलिड लिक्विड दैट काइंड ऑफ थिंग। सो अगर आपके पास दो चीजें ना, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, इनको अलग करना है तो यू नीड फिल्ट्रेशन, ठीक है। और फिल्ट्रेशन के बाद आपने क्या करना है कि अगर सॉलिड चाहिए तो वो रेजिड्यू होगा और उसको आपने ड्राई करना है, और यूजुअली व्हाट वी डू इज वॉश एंड ड्राई। अच्छा, एटीपी में ये काफी यूजफुल होता है, लेकिन अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे। लिक्विड को आपने अगर कलेक्ट करना है तो लिक्विड को आप सीधा सीधा फिल्टर करें और उसके बाद आप उसको क्रिस्टलाइज कर लें। अगर उस लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड है, अगर कोई एक्वस चीज है, कोई सॉल्युबल चीज है, अगर खाली लिक्विड है तो वो तो सीधा सीधा आप कलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। Alright, so if you have an aqueous thing, then you crystallize it, which is part of the liquid. But if you have a pure liquid, then you can just filter it out like that. So that is something you need to remember when it comes to having a solvent, और उसको हमने अलग करना है। अच्छा, फिल्ट्रेशन से पहले एक प्रोसेस होता है। अगर आपके पास दो सॉलिड्स हैं, इनको हम कैसे सेपरेट करेंगे? आप इसमें इनको पहले डिसॉल्व करोगे और फिर इनको फिल्टर करोगे, ठीक है। तो अगर आपके पास दो सॉलिड्स हैं जिनको आपने सेपरेट करना है, लेट्स सपोज दिस सॉलिड इज इनसॉल्युबल, सो दिस वन इज insoluble and this one is soluble, then in that case you will dissolve them first. So dissolve किस में करेंगे? वो solvent जिसमें ये एक soluble होगा। so अगर एक चीज है जिसका बारे में कहते हैं कि वो ethanol में soluble है, तो you dissolve it in ethanol और वहां से आप उसको डिसॉल्व करके फिर फिल्ट्रेशन करोगे, और जब फिल्ट्रेशन करोगे तो उसके बाद आप रेसिड्यू को, जो इनसॉल्युबल होगा वो रेसिड्यू एंड देन यू वॉश एंड ड्राई, और जो सॉल्युबल होगा वो क्रिस्टलाइज कर लोगे। ये कहाँ पे यूज होता है? ये वहां पे यूज होता है जब आपने सॉल्ट प्रिपरेशन करनी होती है। आपको एक सॉल्ट बनाना है जो कि सॉल्युबल है, तो उसको आप फिल्टर करेंगे, क्रिस्टलाइज करेंगे। अगर आपको एक सॉल्ट बनाना है जो इनसॉल्युबल है, तो आप उसको अगेन डिसॉल्व, फिल्टर, डिसॉल्व तो वो हो जाएगा क्योंकि आप एक्वस सॉल्यूशन में कर रहे होंगे, बट देन यू फिल्टर इट एंड देन यू कलेक्ट द रेजिड्यू, वॉश एंड ड्राई इट। तो ये एक टेक्निक है, एक स्कीम ऑफ थिंग्स है दैट यू यूजुअली फॉलो इन ऑल फिजिकल सेपरेशन प्रॉब्लम्स दैट यू हैव। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा लिक्विड चाहिए जो दूसरे लिक्विड में मिक्स हुआ हुआ है, ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड मिक्स हुए हैं तो हमें पता लग गया, सॉलिड और सॉलिड है तो उनको कैसे सेपरेट करना है पता लग गया। व्हाट अबाउट लिक्विड एंड लिक्विड? सो इफ यू हैव दैट थिंग देन यू डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको क्या करना है कि आपके पास मल्टीपल लिक्विड्स हैं जिनको आपने सेपरेट करना है। तो उसमें ऑब्वियसली वन विल हैव अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, वन विल हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, जैसे फिल्ट्रेशन पार्टिकल साइज की बेस पे होती है, ठीक है, या डिसॉल्व जो है वो सॉल्युबिलिटी की बेस पे होता है। तो ये चीज आपने देखनी है कि आपका जो भी वो दो चीजें मिक्स हुई हैं उनके बीच में डिफरेंस किस बात का है। सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस है तो डिसॉल्व कर लें, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लें। तो यू जस्ट हैव टू कंसीडर व्हाट इज द मेन डिसाइसिव फैक्टर, उनमें डिफरेंस क्या है, और उस डिफरेंस की बेस पे आप फिजिकली उनको सेपरेट कर सकते हैं। अबाउट द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ इट, एंड फॉर दिस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर ये तीनों की तीनों आपको आनी चाहिए। From 2023 we are going to just focus on 2 of them. So which ones are those? So the first one is fermented liquor. So when you have fermented liquor, then you need to know that there is alcohol mixed with water, okay, and so you should be able to separate alcohol, water, and if there is some solid part, though, you should be able to separate them. Then you have air. So fractional distillation of air, so you have different fractions in the air, so you need to know about air being 79% nitrogen or 78% nitrogen. If you're in IGCSE, you can even say 80%, 80% nitrogen, and then you have 20% or 21% or whatever you जो आपने वैल्यू चूज किया उसके रिलेटेड ऑक्सीजन है, और बाकी सारा कुछ आपके पास। आर्गन इज द थर्ड वन, सो दैट्स इंपॉर्टेंट कि आपको थर्ड गैस का भी पता होना चाहिए। आर्गन इज द थर्ड वन। देन यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल दैट। सो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे हम सेपरेट करते हैं, और एवरी फ्रैक्शन दैट यू सेपरेट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसका यूज क्या है, आर्गन का क्या यूज है, नाइट्रोजन का क्या यूज है, ऑक्सीजन का क्या यूज है। When we get to environmental section, I will tell you about that as well. Similarly, the third one is crude oil. So crude oil में there are 5 fractions that you need to know about. In IGCSE there are 7, but in O levels there are 5 that you need to know about. तो इनकी डिफरेंस आपको आना चाहिए। By the way, I need to clarify कि IGCSE का मैं यहाँ पर extended syllabus की बात कर रहा हूँ। I'm not talking about the core syllabus, but if somebody has any issues with just the core syllabus, so you can always send me a message. All right, so crude oil is the third application of fractional distillation that you need to know about, and you need to know about कि वो fractions क्या हैं, उन fractions के uses क्या हैं, चाहे वो alcohol है, चाहे वो air है, चाहे वो crude oil है। आपको fractions के नाम और उनके uses पता होने चाहिए। हाँ, उनके boiling points पता नहीं होने चाहिए, वो जरूरत नहीं है, वो उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता है।
All right. Then you should be able to identify that melting point is an important way of identifying a pure substance. A fixed melting point in O levels or IGCSE means that you have a pure substance. और उसकी बेस पे आप बता सकते हो कि उसके solid है या liquid है या gas है क्या है. तो आपको वो पता होनी चाहिए. That if they give you a table in which you have melting points given and you have the boiling points given, तो आप वहां से कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी चीज है. तो वो आपको देखना है which of them matches. Another one जो आपसे पूछता है the state at room temperature. That is another one that they ask you about. So how do you know state at room temperature? जो भी आपके पास options हैं वहां पे 25 लिखें, एक नंबर लाइन बना लें और 25 लिखें. So let's suppose आपके पास A B C D 4 ऑप्शन है. So the question is, what really is a pure substance? A pure substance is the one with only one kind of particles. It can be an element or it can be a compound. Both of them are pure, but a mixture is an impure substance because it can have atoms or ions or those kind of things mixed together. All right, so I hope that answers it. Okay, so we have this thing here. So we have the melting point, we have the boiling point. So different values are there. Let's suppose melting point is 351 and 752, and this one is minus 81 and this is minus 200. I don't know. So this is minus 25. Similarly, here we get minus 25 and 257, and here we get 18091 and 2575, whatever. अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि 25 कहाँ आता है. ठीक है, सो नंबर लाइन बना लें यहाँ पर. सो आप एक लाइन बनाओ, 25 देखो यहाँ पे आएगा. ठीक है, और आपने स्टेट कैसे देखनी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस. ये वो चीजें जो आप खुद लिखोगे उस टेबल के ऊपर. सॉलिड, लिक्विड, गैस. नंबर लाइन बनाई 25, यहाँ पे नंबर लाइन बनाई 25 यहाँ आता है, यहाँ पे नंबर लाइन बनाई 25 यहाँ आता है, यहाँ पे नंबर लाइन बनाई 25 यहाँ आता है. कैसे पता चल रहा है? क्योंकि 1801 उससे बड़ा है तो मैंने यहाँ पे लिखा. अब वो आपसे पूछे कि ए की क्या स्टेट है एट रूम टेम्परेचर, तो 25 पे देखें वो क्या है, वो सॉलिड है. बी की क्या स्टेट है? गैस. सी की क्या स्टेट है? लिक्विड है. डी की क्या स्टेट है? सॉलिड है. ठीक है, you just make a number line and you're able to identify कि वो चीज solid है, liquid है, gas है. Obviously, this is a question that most of the students would be able to do without the number line. But if you're somebody who finds it difficult, this method will definitely help you guys over there. अच्छा, purity in daily life. That's another important thing जिसके बारे में आपसे पूछता है. तो how do you check purity? You check it through melting point. You check it through RF value. Those are the two tests that you have. Melting point fix होना चाहिए. RF value में there should be just one RF value or there should be just one spot on the chromatogram. अगर वो है तो वो प्योर चीज, अगर नहीं है तो नहीं. ठीक है, इसी तरह RF वैल्यू में एक इंपॉर्टेंट चीज है चेक करने के लिए कि हम एक प्योर चीज ले लेते हैं. सो लेट्स सपोज ये एक प्योर चीज है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट याद रखें. जस्ट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू देम. जिस चीज में से हॉरिजॉन्टल लाइन गुजर जाएगी वो सारी चीजें कॉमन है. तो ये रेड डॉट का मतलब है कि बी के अंदर ये रेड डॉट अवेलेबल है, ए में नहीं है बिकॉज इट्स नॉट ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. सो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूजुअली हेल्प्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इज अवेलेबल इन दिस. एग्जाम में वो आपको पूरा क्रोमेटोग्राम देगा, 4-5 चीजें होंगी. जस्ट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस टू चेक कि कौन सी चीज किस में मौजूद है. जहां पे वो मैच करे वो आपका आंसर है. 2 मेन एप्लीकेशंस जहां पे प्योरिटी इज सुपर इंपॉर्टेंट. फूड, ऑब्वियसली वाटर, फूड, एंड देन ड्रग्स, द मेडिसिन दैट यू यूज, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्योरिटी. ओके, अगला चैप्टर आ जाता है आइडेंटिफिकेशन. जो भी आपके पास आयंस हैं, जो भी गैसेस हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, उनका टेस्ट कैसे करते हैं. और वो टेस्ट बड़े सिंपल हैं, वो याद करना बहुत जरूरी भी है. ठीक है, और Iman, I'll answer that question when we talk about acids and bases. So all right, so let's start with this. 8 cations. 8 cations आपको कैसे पता चलेंगे कौन सा है? तो हमारे पास सबसे पहली चीज है कि उसको टेस्ट करने के लिए 2 रिएजेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. You see a common thing here? The common thing is hydroxide, which tells me the colors that we get, they're not for copper, they're not for aluminium, they're not for ammonium. Those are not the tests. The tests are for the hydroxide that they have. ये एक बड़ी जरूरी चीज है इनमें रखना. कॉपर का कलर नहीं होता, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर होता है जो ब्लू कलर है. कॉपर तो पिंक है. आयरन का कलर नहीं होता. आयरन 2 इज नॉट एनी एलिमेंट. आयरन 2 हाइड्रोक्साइड का कलर है ग्रीन. तो एग्जाम में वो इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों को ये नुक्ता नहीं पता होता, वो इसके ऊपर आपको तंग कर सकता है, इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है. सो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में या अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कैटायंस का टेस्ट क्या है? आपने सीधा देखना है
कि अगर तो वाइट है तो ट्रांजिशन नहीं है, अगर कलर्ड है तो ट्रांजिशन है। ये चीज हो गई, व्हाइट है तो ट्रांजिशन नहीं है, कलर्ड है तो ट्रांजिशन है। समझ आ गई जी। अब 3 बेसिक कलर्स होते हैं आपके पास, रेड, ग्रीन, ब्लू, इन्हीं के ऊपर टेस्ट आता है। ठीक है, अच्छा अब व्हाइट है तो कौन सी ऑप्शन है? एल्यूमिनियम, जिंक, ये 2 ऑप्शन है आपके पास है, और कैल्शियम। ठीक है, और रेड, ग्रीन, ब्लू में क्या ऑप्शन है आपके पास? आपके पास रेड में ऑप्शन है आयरन 3, ग्रीन में ऑप्शन है क्रोमियम 3 एंड आयरन 2, और ब्लू में ऑप्शन है कॉपर 2। ठीक होगा, एल्यूमिनियम 3+ है, जिंक 2+ है, कैल्शियम 2+ है। जिंक के बारे में एक चीज ध्यान में रखिएगा, जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, स्कैंडियम इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। जिंक एंड स्कैंडियम बोथ ऑफ देम, रिमेंबर स्कैंडियम का सिंबल Sc होता है, दे आर नॉट ट्रांजिशन मेटल। अगर वो रिएक्ट करेंगे तो वो वाइट प्रेसिपिटेट में। अच्छा, तीसरी चीज है गैस। अगर गैस इवॉल्व होती है तो उसका मतलब है अमोनियम आयन है। अमोनियम के बारे में एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, नंबर 1, इट हैज आयनिक एंड कोवेलेंट काइंड बॉन्डिंग, बोथ ऑफ देम। When ammonium reacts, it forms ionic and covalent, both of them. And secondly, you have to remember that it will always be acidic. Ammonium is acidic, so ammonium chloride acidic, ammonium carbonate acidic. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, सो ये हमें यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट मिल गया। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट कैसे होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के टेस्ट में और इसमें थोड़ा सा फर्क है। यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे दोबारा लिखने में आसानी हो। सो वी हैव दिस थिंग है, तो फर्क क्या पड़ेगा? हाउ इज दिस वन डिफरेंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां पर गैस प्रोड्यूस हो रही है, या सो जहां पर गैस प्रोड्यूस हो रही है वहां पे नो रिएक्शन आ जाएगा, और कैल्शियम इज द वन जो यहां से उठ के इधर आ जाएगा। एंड दैट्स द ओनली डिफरेंस यू हैव, दैट्स द ओनली डिफरेंस यू हैव। अगर आप यहां पे गौर करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के टेस्ट में सिर्फ इतना सा फर्क है। अच्छा, अब जो सॉल्युबल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास ये दोनों सॉल्युबल है और ये सॉल्युबल है, और यहां पर ये सॉल्युबल है और ये सॉल्युबल। तो आपको सॉल्युबिलिटी याद रखनी है। द सेकेंड टेस्ट इज ऑलवेज सॉल्युबिलिटी टेस्ट। तो 3 पहले में, 2 दूसरे में सॉल्युबल है, और फर्क याद रखें कि अमोनियम एक में गैस देता है, एक में रिएक्शन नहीं करता, और कैल्शियम एक में वाइट देता है और दूसरे में रिएक्शन। सो दैट्स द डिफरेंस। द डिफरेंसेस यार, आप एक टेबल का याद रखो और दूसरे के सिर्फ डिफरेंसेस याद करो। फर्स्ट टेबल में अमोनियम गिव्स गैस, कैल्शियम इज वाइट। In the second table, ammonium and calcium both don't react. ये डिफरेंस है। और सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस ये है कि फर्स्ट में एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, ठीक है, ये तीनों आपके पास रिएक्ट होंगे, और दूसरे में कॉपर एंड जिंक, दैट्स द ओनली वन जो कि रिएक्ट सॉल्युबल होंगे, बाकी नहीं। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स द कैटाइंस दैट यू हैव। आपके 8 के 8 यहीं से चेक कर लिए जाएंगे। एंड रिमेंबर जस्ट वन पॉइंट, द कलर्स आर नॉट फॉर कॉपर, नॉट फॉर क्रोमियम, नॉट फॉर आयरन, द कलर इज ऑलवेज फॉर द copper hydroxide, chromium hydroxide, iron hydroxide. The better way would be to say copper 2 hydroxide or chromium 3 hydroxide. ये आपके पास हो गई कैटाइंस के टेस्ट। अब एनाइंस के टेस्ट पे आ जाते हैं। एनाइंस है आपके पास 6, ठीक है। अब एनाइंस का टेस्ट किस तरह से होगा? आपको 2 हैं जो कि गैस देंगे, और सॉरी 3 है जो कि गैस देंगे, और 3 है जो कि प्रेसिपिटेट देंगे, और प्रेसिपिटेट का कलर आपने चेक करना है। एनाइंस में ये चीज है। अब अगर आप एनाइंस को देखो तो हमारे पास एक है कि हमने बिल्कुल ही वो ऑपोजिट है बाकी सबसे, एंड दैट इज नाइट्रेट। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डालनी, एल्यूमिनियम फॉयल ऐड करना है एंड हीट करना है, और आपको अमोनिया गैस मिल गई, तो दैट इज नाइट्रेट। अब यहां पर क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? डू यू सी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द सेम थिंग दैट इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर एनाइन एंड द कैटाइन। कैटाइंस में भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे थे, एनाइन में भी हम कर रहे हैं। तो दैट इज अ क्वेश्चन दैट दे समटाइम्स आस्क कि कौन सी चीज है जो कि दोनों को चेक किया जा सकता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह दूं कि अमोनियम नाइट्रेट मुझे चेक करना है, तो मुझे एक ही चीज से चेक करना है उसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। दोनों आइंस मेरे चेक हो जाएंगे वहां से। फर्क क्या है? और इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। फर्क इतना सा है, जब मैं NaOH खाली ऐड करूंगा तो मुझे सिर्फ अमोनियम रिस्पॉन्ड करेगा, नाइट्रेट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट को एल्यूमिनियम फॉयल भी चाहिए, हीट भी चाहिए।
तो रिएक्शन ये आ सकता है कि अच्छा पहले हमने NaOH डाला था, गैस निकली, फिर हमने एल्यूमिनियम फॉइल डाल के हीट किया, फिर गैस निकले, तो अब ये कौन सी चीज है भाई? सीधी सी बात है, पहला जब गैस निकली थी वो अमोनियम था, दूसरी जब गैस निकली थी तो वो नाइट्रेट था, दोनों आयंस अवेलेबल हैं. So that's a question that they ask, and they sometimes do ask that question. So there's a question on a precipitate. I'll get to it when we talk about equilibrium. So just bear with me. अच्छा, तो ये नाइट्रेट इज द ओनली टेस्ट जो कि बिल्कुल ऑपोजिट चलता है बाकी सबसे. इसमें गैस है बट इट्स टोटली ऑपोजिट टू द अदर वंस. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ देम? अच्छा, दूसरे जो है हमारे पास वो हैं कार्बोनेट है. कार्बोनेट इज द सेकंड वन दैट गिव्स अ गैस. और वो किस तरह से गैस देता है? आप उसमें ऐड द एसिड. Usually we can add any acid that we want, but nitric acid is a better choice. क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, और उसकी वजह ये है कि सॉल्ट उसका हमेशा सॉल्युबल होता है, नाइट्रेट. तो नाइट्रिक एसिड ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि वो कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बना सकता. सो यू ऐड नाइट्रिक एसिड, यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट आपको पता होना चाहिए, दैट इट टर्न्स लाइम वाटर. मिल्क की बहुत बेसिक चीजें 6th-7th में पढ़ रहे थे. अच्छा, तो ये हो गया कार्बोनेट का टेस्ट. अब अगला टेस्ट ये है कि आपने एसिड ऐड कर दिया, ठीक है, अब यही एसिड के आगे चलना है हमने. ऑलराइट, सो वी ऐड एसिड, और अब जितने भी बाकी हम चेक करेंगे ना उनमें ये एसिड वाला पोर्शन रहेगा. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू द रेस्ट ऑफ देम. सो एसिड ऐड कर दिया, क्लोराइड, ब्रोमाइड. ब्रोमाइड वैसे IGCSE में है, ओ लेवल्स में नहीं है. सो आयोडाइड, यू हैव सल्फेट एंड यू हैव सल्फाइड. अब ये बाकी चार हैं, इन सब में ये पहला स्टेप है, एडिंग द नाइट्रिक एसिड. क्यों? क्योंकि कार्बोनेट इज एन इम्प्योरिटी दैट यू यूजुअली फाइंड. तो अगर इम्प्योरिटी होगी, रिमेंबर ये सारे का सारा आपके सॉल्ट्स के साथ रिलेटेड है. सॉल्ट्स में हमने पढ़ा था कार्बोनेट्स आर ऑल इनसॉल्युबल. सो नाइट्रिक एसिड ऐड इसलिए कर रहे हैं कि अगर कार्बोनेट हो तो वो खत्म हो जाए, ठीक है, बिकॉज अगर कार्बोनेट होगा हमेशा प्रेसिपिटेट बनाएगा. जो मर्जी टेस्ट कर लो, प्रेसिपिटेट बना देना उसने, बिकॉज इट्स इनसॉल्युबल इफ नॉट फॉर स्नैप अगेन. तो हम नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं ताकि कार्बोनेट हो तो खत्म हो जाए. तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप दैट यू ऑलवेज डू. उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों के लिए सिल्वर आयन ऐड करना है जिससे हमारे पास चेक होगा, और इन दोनों के लिए बेरियम आयन ऐड करना है. और भी मैं इसको रिलेट करूंगा अगले चैप्टर के साथ, और आप देखोगे कि हाउ स्मार्ट दीज टेस्ट्स आर. ठीक है, सिल्वर आयन ऐड करना है. कौन सा सिल्वर आयन ऐड करेंगे? ऑब्वियसली अगर आपने नाइट्रिक एसिड ऐड किया हुआ है, सो वुडंट इट बी अ गुड आइडिया टू जस्ट ऐड अनदर नाइट्रेट, because you already have nitric acid in there, HNO3. That is why we add silver nitrate. That is why we add barium nitrate. All right, the point here is not nitrate. We need silver to check for chloride and iodide, and we need barium to check for sulfate and sulfide. तो क्या होगा? अगर तो क्लोराइड है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा सिल्वर क्लोराइड का. तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि किस चीज का प्रेसिपिटेट है. भाई वो सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन का टेस्ट है. क्लोराइड का व्हाइट कलर नहीं था, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर था. आयोडाइड है तो येलो कलर होगा. ये दोनों व्हाइट होंगे, ठीक है, दोनों व्हाइट होंगे, क्योंकि सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम टू फॉर्म बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फाइड. ठीक है, अच्छा, अब इसके आगे क्या होगा कि सल्फाइड के लिए यू फर्दर हीट इट. तो अगर कभी भी एमसीक्यू में आपसे कह देता है कि हमने हीट किया था इसको बेरियम ऐड करने के बाद, तो बताएं जी ये कौन सा टेस्ट है? भाई ये सल्फाइड का टेस्ट है. ठीक है, सो व्हेनेवर यू हैव दैट थिंग कि आपके पास सल्फाइड है, तो आप उसमें क्या करते हो, आप उसमें एसिड ऐड करते हो, और हमारे पास उसका रिजल्ट जो है वो सिंपल सा है, आप HCl ऐड करोगे, ठीक है, और वो सल्फाइड जो है वो उससे रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस देगा. ठीक है, सो वी ऐड एसिड एंड हीट, तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ जाती है. सो दैट्स एन एडिशनल थिंग फॉर सल्फाइड. आई नो, yes, you're right, bromide is rusty in color, and bromide with silver, जो ब्रोमीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, वो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन ब्रोमाइड is going to give us off white, not in the syllabus. Similarly, सल्फाइड का टेस्ट में you just have to remember कि additional टेस्ट क्या है, you add acid, you heat it, you get sulfur dioxide. That is a new one, syllabus में recently add हुआ है, इसलिए मैं उस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ. उसको याद रखिएगा that sulfide, when you add acid to it, it heats it up, and you heat it up, you get sulfur dioxide gas. Not going to get that with sulfate. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो कि नया है. बाकी सब चीजें आप बड़े अरसे से करते आ रहे हो.
अब आ जाते हैं गैसेस के ऊपर। गैसेस आपके पास बड़ी सिंपल सी, यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसका क्या टेस्ट है, यू pass it through lime water, it turns cloudy. Ammonia का टेस्ट क्या है, it's the only basic gas in your syllabus, it turns red litmus paper blue. डैम्प होना जरूरी है because डैम्प होने से वो absorb जल्दी होता है। अच्छा, फिर हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन is an acidic gas and not just acidic, it bleaches it. तो you use damp litmus paper, doesn't matter what color, it's going to go white. अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि what gas changes the color of both kinds of litmus paper? Chlorine, because chlorine is going to bleach it. Red हो blue हो उसने white कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हाइड्रोजन का है, you use a burning splint, gives a pop sound. ऑक्सीजन का है, you use a glowing splint. फर्क क्या है कि हाइड्रोजन में you need the flame, in oxygen you don't need the flame. हल्का सा ग्लो कर रहा है तो it's going to burn up. Sulphur dioxide is an oxidizing, so sulphur dioxide is a reducing agent. So that's what you need to know. It's a reducing agent. So that means you react it with an oxidizing agent. So oxidizing agent आपके syllabus में कौन सा है? KMnO4. That's it. So you add KMnO4 to it. So this plus this, it's going to give you change. कैसे? KMnO4 purple होता है, purple to colorless हो जाएगा और आपको वो गैस पता लग गई कि ये सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, so that is the test for this gas that you have, and that is the end of the first section, which is the experimental chemistry, जिसमें बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं, बहुत सारे फैक्ट्स याद करने वाले हैं, तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। So what's the difference between galvanizing and sacrificial thing? Okay, so sacrificial protection is basically a way of making sure that you take one metal which is more reactive and you attach it to a less reactive metal. That way, if there is going to be a reaction, the more reactive metal will react, will sacrifice it, and the less reactive metal will be saved. So one application is you use magnesium blocks, you attach them to ships, और उससे क्या होता है कि water or oxygen in there, when it's going to react, it reacts with magnesium, not iron. तो हमारा जो ship है उसकी body save हो जाती है. Galvanizing is a special name given to that same thing but happening with zinc. The difference, a little bit of difference is, first of all, you dip the whole thing in zinc. So zinc liquid उसके ऊपर coat कर देते हैं. That's a coat of zinc on that thing. So when it reacts, that layer of zinc is going to react. That's one thing. It's not like a small blocks add करते हैं. And it's just specific to zinc. किसी और चीज में नहीं होती. So galvanizing ये. So it's like एक और protection का तरीका है paint. Paint क्या करता है कि हम paint is a barrier that is between metal and the atmosphere or the moisture that you have. So उससे paint उसको react नहीं करने देता. So the problem with that is once paint chips away, so वहाँ पर reaction हो सकता है. But with sacrificial protection, वहाँ पर अगर वो metal नहीं भी है, उसके पास भी है, तो वो उसको save कर लेता है. It's a better option, although a little more expensive. But then again, it depends on the paint you use. There is a question that can we use calcium oxide as a dehydrating agent? Yeah, you can, but again, this is not a paper where you will be asked to write your answers. This is a paper you will have to identify the options. ठीक है, तो यहाँ पर concentrated H2SO4 ही आना है, वो आपको कभी भी calcium oxide as a dehydrating agent का question नहीं पूछ सकता. All right. Also for neutralization, Yeah. what is the amount of acid and what is the amount of base? So for both the acid and the base, are the amounts and the moles supposed to be equal? So if you want neutralization, exact neutralization, then you need the moles of H positive. We have talked about this. You need moles of H positive equal to moles of OH negative. Okay? So there was a question and there was more of the acid or more of the base than the other thing. That's fine. You might have one of the things extra than the other. Similarly, sometimes they give you H positive and OH negative in a ratio this is not 1:1. ठीक है, वो आपको H2SO4 का NaOH से रिएक्शन करवा देगा. तो आपने न्यूट्रलाइजेशन में बस देखना है कि मोल्स ऑफ H positive और मोल्स ऑफ OH negative बराबर होने चाहिए. It's not about the acid or the base. Okay? Okay, thank you. Yeah. So somebody has shared this question. So when bismuth 3 chloride is added to water, a reaction occurs and a white pressure bismuth BiOCl is formed. You don't need to know what the name of this thing is. So BiOCl and BiCl3. So this is solid. So this is going to be a press plate, right? So this is a press plate. What change, which change increases the mass of white pressure? So question basically what change will drive the equilibrium forward?
सो हमने ये देखना है कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड कैसे जाएगा. अब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड कैसे जाता है, एलसीपी याद रखें, Le Chatelier principle. Whatever you do, whatever change you do, the reaction is going to do the opposite. So if you add more water, then you're adding a reactant. So obviously the reaction will go forward. So this is right. Adding sodium hydroxide. If you add sodium hydroxide, what happens? You have HCl, right? That HCl will react with sodium hydroxide, produce more water. Obviously NaCl बनेगा, लेकिन that's irrelevant. It will produce more water. वापस वही बात होगी पहले वाली. It will create more water, drive the equilibrium forward. Another way of looking at this is कि HCl कम होता जाएगा. जब HCl कम हो रहा है तो reaction will try to make more of HCl. Adding dilute HCl, that means HCl ज़्यादा हो रहा है. जब HCl ज़्यादा हो रहा है, reaction backwards जाएगा. So this is not the option. So that is why this is the option. So the next question is, how do you join Zoom room? So if you want to join the Zoom, then it's really simple. Go to advice.official profile. There's a link in there. Sign up over there and they'll add you to the Zoom group. We have a WhatsApp group where we discuss problems and all that. So it's a So for good the air way of fractions, discussion. Yeah. for the air What about fractions, them? are we supposed to learn them chronologically, or I don't know how if there's a chronological order or not. I don't think we're studying geology they or have something these here. boiling points, and then So there's you a don't need to remember the boiling point of the fractions. You just need to know, number one, in O levels, you need to know that 78% of air is nitrogen and 21% is the oxygen. That's one number that you need to remember. Then you need to know that argon is the third main gas, and then there is carbon dioxide. ये चार gases आपको पता होने चाहिए. आपको इनके uses पता होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वो स्टील में यूज होती है. ये हम कल बातें सारी करेंगे. ठीक है. आपको पता होने चाहिए कि पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं एयर के अंदर. So that is from the. इसी तरह आपको क्रूड ऑयल के बारे में भी उसकी फ्रैक्शंस वगैरह का बताना चाहिए. I'm sorry? crude oil की fractions. Are we supposed to learn the air fractions like we learned the crude oil fractions? जैसे कि the in last crude oil, determine. yeah, in crude oil you do need And to then know the there's- fractions. Yes, you do. And you also need to know कि उनके uses क्या हैं. So you need to know कि naphtha जो है it's used as feedstock, और petrol जो है it's used as fuel and all that. So ये बातें आपको पता होनी चाहिए. The best way to remember this. Other कैसे पता? fermentation. I'm sorry, could you say that again? There was this other air fraction वाली आप कह रहे थे, the fermentation वाला. Yes. So उसमें alcohol or water. What is that? That is when you make Okay. alcohol from fermentation. Remember glucose को ferment करते हैं और Yeah. So in O levels, as I said before, there are 6 fractions that you need to know, and the best way to remember all of this, go on Google पे जाएं, write your syllabus code. So for example, if you're studying O levels, write 5070 syllabus. If you're studying IGCSE, write 0620 syllabus. And then read the, if you go in there, there will be a topic called details of the assessment in IGCSE syllabus, या दूसरे के अंदर होगा content. ठीक है, syllabus content or something. That will be a heading. उसको एक बार पढ़ लें. You will see many small points in there. Highlight those. उनको लिख लो कहीं पे. वो याद करने वाली बातें हैं जो सिलेबस में उसने बोली हुई हैं, जिसका मतलब है कि वो तो डेफिनेटली आपको याद होनी चाहिए. Alright, so do that exercise tomorrow before the session so that you, when we discuss those things in class, आपका refresh हो जाए. Also, sir, Right. what did we do at 5? What class did we have at I 5? was available for, so at 5 o'clock, I always, so these days I'm going to be online at 5 o'clock, in fact 4:50, and we will be discussing any problems that you might have, जो आप WhatsApp groups वगैरह में भेजते हो या आप वैसे मुझे भेज देते हैं बहुत सारे students. So I'm going to discuss those from now on because we are done with the syllabus revision, we are done with the past paper revision. So अब हमारे पास problem solving है, so that's an optional case. I will still be available in case anybody needs my help. So all the rapid revision sessions, people are more than welcome to join. Process, Yeah. what exactly are we supposed to know? So there are in 3, contact 4 process, reactions. so in Right. अगर आप देखो ना तो contact process is just one reaction. It is sulfur dioxide being oxidized. Sulfur dioxide plus oxygen makes sulfur trioxide. Alright, that's it. तो उसमें catalyst है, V2O5 आपको याद होना चाहिए. उसमें temperature और pressure conditions हैं, 1 to 2 atm pressure है और 250 या 450 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोई भी टेम्परेचर, ये आपको याद होनी चाहिए. In O levels the requirements are a little more rigid.
I'm sorry, go on. They usually ask us that when is the catalyst added in the reaction? So it's And added when you have sulfur dioxide reacting with oxygen, because that's a reversible reaction. So uski yield ko तो नहीं, rate of reaction को बढ़ाने के लिए हम catalyst use करते हैं. when sulfur dioxide is being made, basically. Yes, when sulfur dioxide, because that is the key reaction in contact process. बाकी उसकी तैयारी है. What is oleum? Oleum is H2S2O7. It is basically a mixture, like not exactly a mixture. It is a compound that we get. It's a substance that we get when we react H2O and are we supposed to know about oleum and cryolite? Cryolite so for the you take aluminium. so you need to know that SO3 is added to H2SO4 and it forms oleum. That's one thing you need to know. So it's a stage in there. You need to know कि हम वो इसलिए करते हैं because this is less exothermic than making H2SO4 right away. So you can easily make H2SO4 by dissolving SO3 in water, but that is such an exothermic reaction कि वो explosive हो सकता है और वो हम नहीं करते. So to avoid that, we use oleum वाला process where we add SO3 to H2SO4 to make oleum. Similarly, cryolite का formula आपको याद करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ ये याद करना है कि cryolite is added as an impurity to bauxite or Al2O3. अब वो bauxite exact नहीं होता, वो Al2O3 from bauxite होता है, लेकिन वो सारा प्रोसेस अगर आप वो बुक यूज कर रहे हो प्रेस्कॉट की, तो उसमें बड़ी डिटेल में उसने लिखा हुआ है, या बैबियो की बुक में भी उसने बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है. किसी को उस डिटेल की जरूरत नहीं है आप ओ लेवल्स में या IGCSE में. यू डोंट नीड टू नो कि कैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं. जो भी करते हैं कि हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाता है, हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए क्रायोलाइट यूज होता है और उसका इलेक्ट्रोलिसिस से एल्यूमिनियम बन जाती है. Byproduct oxygen which reacts with carbon to make carbon dioxide. A very important point over there is to remember that electrolysis may you have inert electrodes. You have carbon and platinum that are inert, but carbon is reactive at high temperature. So that is a point that you need to know. If there is oxygen coming in and the reaction temperature is high, you will not get oxygen, you'll get carbon dioxide because it will react.